So now, what is PCNF? A formula alpha is in principal conjunctive normal form if alpha is a product of max terms. Max terms का product होगा. Max terms. Okay. Now, for obtaining a principal conjunctive normal form of alpha, we can construct principal conjunctive normal form by applying negation of alpha and apply the negation again. मतलब double negation. एक बार negation करेंगे and then again negation will apply. So this one is in the form of PCNF, product of some form. So P or Q implies R, negation of Q or R. So this Q implies R is equal to negation of Q or R. And then this is our PCNF form. The second problem is P and P implies Q. Okay, P and P implies Q. So P implies Q can also be written as negation of P. See, P and P implies Q. We need to convert it in PCNF, principal conjunctive normal form. So implication can be converted to P and negation of P or Q. Okay. Now we'll apply distributive law. Okay, but if we apply distributive law again, we'll be getting P and this P is combined with this Q. So here in this is already in some form, and it should be in the POS, product of some form. So this is already in some form, and this is our product. So this answer is in CNF, but we need to convert it in principal conjunctive normal form. CNF में तो है, principal में convert करने के लिए क्या चाहिए, इसके साथ में Q का term चाहिए. तो what we'll do, we'll add Q term with this P or Q and negation Q. This is the term which is being added so that we can convert it in principal disjunctive normal form. This one, so with this term we have added this part, and this is copied as it is, negation of P or Q. Now we'll apply distributive law. P or Q and P and negation of Q and negation of P or Q. Okay. This one is OR. So this is P or Q and P or negation of Q and negation of P or Q. So this is our required principal conjunctive normal form. ये कौन सा है हमारा principal conjunctive normal form हो गया. Okay. Similarly, let's switch over to the next problem. Now see here, this is biconditional. This biconditional is to be resolved. ये convert होना चाहिए, and then we have to obtain the principal conjunctive normal form. Principal conjunctive normal form में हमको sum of product के form में represent करना है. Okay. So what we have done, ये जो हमारे पास में डबल इम्प्लीकेशन है, बाइकंडीशनल है. बाइकंडीशनल का मीनिंग क्या होता है? सपोज इफ आर बाइकंडीशनल एस इज देयर, दिस इज इक्वल टू आर इम्प्लाइज एस एंड एस इम्प्लाइज आर. दिस आर इम्प्लाइज एस एंड एस इम्प्लाइज आर. So this entire term is R, this entire term is S. So what we'll do, this entire term is copied as it is, implies this term, and this term is copied as it is, implies this term. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है. कैसे अप्लाई किया है इसको? This entire term is treated as R. This entire term is treated as S. Okay. So what we have done, R, this is R, this one is S, similarly this is R,
and this one is S. This one is R. Okay, R by conditional S is equal to R implies S and S implies R, and this is R. And so if you treat this as R, this is copied as it is, implies this is treated as S, and this is, sorry, S. This is S implies R implies S, S implies R. R implies S, S implies R. Okay. So okay. So what we have done, this R implies S and S implies R. So this part R implies S and S implies R. Now this implication can be written as P implies Q can be written as negation of P or Q. Okay. So what we have done, this one is converted to or, this or this. Similarly, this and is copied. This term, negation of this term or this term. Okay. So what we have done, यहाँ पर एक negation already था, ये copy किया, तो ये P implies Q का एक negation रहता है, तो ये negation इसकी वजह से आया, क्योंकि यहाँ implication है तो ये negation इसकी वजह से आया. Similarly यहाँ पर कोई भी negation नहीं, एक negation आ गया, ये implication convert हो गया और में, ये implication और में convert हो गया. Okay. Now double negation cancel हो गया, P और Q, this or is copied, P and Q, this and this term is written as it is, this term is written as it is. पूरा as it is कॉपी किया, ये भी कॉपी किया, ये भी कॉपी किया, ये भी कॉपी किया और ये भी कॉपी किया. सिर्फ ये डबल इम्प्लीकेशन जो है इसको हमने रिजॉल्व कर दिया. नाउ P और Q और P distributive law, this P is being given to this P or Q. Okay, this Q is given to this term. So P और Q और Q देखा, ये डिस्ट्रीब्यूट किया, ये जो दोनों टर्म है पहले इसको दे दिया, फिर ये Q को इन दोनों को दे दिया है, तो P इसके साथ में ऐड हो गया, P और Q, ये P वाला ऐड, ये वाला, इसके बाद में ये वाला जो Q है, this Q is been given to P और Q. सिमिलरली यहाँ पर क्या किया, ये नेगेशन P and Q और ये टर्म एज इट इज पूरी कॉपी की है, ये टर्म एज इट इज और ये टर्म एज इट इज. Now this P and this P forms a single P by the law P or P is equivalent to, this is equal to P. Similarly Q or Q is equal to Q. Okay. So here this double P is equal to single P, this double Q is equal to single Q, and rest of the terms are copied as it is. Okay. Now this term is copied as it is, this term is copied as it is. Okay. This term is copied as it is. ये दो बार है, P और ये वाला टर्म कॉपी एज इट इज किया, this one is here. Okay. और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, P और Q, तो इन दोनों को क्या किया हमने, what we have done, ये दोनों को हमने सिंगल लिखा. By the rule R and R is equal to single R. Okay, so this one and this term, ये दोनों एंड हो गए, तो ये वाला एक टर्म आया. ठीक है, इसके बाद ये वाला टर्म यहाँ पर कॉपी किया, ये टर्म यहाँ पर. नाउ
this is here, this is here, this term is copied here. De Morgan's law, this negation is distributed among these two, so negation P, ये और का क्या बन गया, एंड बन गया, negation P और negation Q. Okay, this is copied as it is, this is copied as it is. Now this is distributed among these two, negation P और negation Q और negation P. ये इसको भी दिया, negation P और negation Q, negation Q. ये दो बार फिर से negation Q आया, इसको एक बार लिखो. ये दो बार negation P आया, इसको एक बार लिखो. Now this is our product sum, POS, product of sum form, plus this is principal disjunctive normal form. Why? Because PQ term is with all the sum products. जो sum के terms हैं, उसमें सारे variables appear होंगे. जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं CNF, तो देखो CNF में ये इसका CNF निकाला तो यहाँ पर Q का टर्म मिसिंग है, यहाँ पर PQ है, तो CNF में सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ सम लिखना है, प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में है. यहाँ पर ये Q जो है ये टर्म मिसिंग है, जबकि प्रिंसिपल फॉर्म में क्या करना है, इन प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर और, यहाँ पर और, यहाँ पर और ये और दोनों PQ के साथ, ये PQ के साथ में PQ के साथ. So this is principal conjunctive normal form. Again I'll repeat, this biconditional is being replaced by implication. This implication is being replaced by the formula negation P or Q. Okay, after you apply these terms, you apply distributive law, De Morgan's law, and try to achieve the product of sum for principal form. Principal form में क्या होगा, सारे terms दिखाएंगे. See, this is the next problem. Again यहाँ पर देखते हैं, यहाँ सिंगल इम्प्लीकेशन है, यहाँ सिंगल इम्प्लीकेशन है, तो ये इम्प्लीकेशन को रिजॉल्व करेंगे. पहले इसको क्या किया, P implies this term. Okay, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा. Okay, P implies this term, so this implies is being replaced by negation P और Q. Similarly this negation डबल negation हो गया, एक इसका ऑलरेडी था, एक और ये और. This is according to P implies Q is equal to negation of P or Q. Okay, so this is negation of P or this term. This is negation of double negation or this term. तो यहाँ पर हमने इसको एज इट इज कॉपी किया, इसको कॉपी किया, ये स्टेटमेंट कॉपी, ये स्टेटमेंट कॉपी. दिस डबल नेगेशन इज बीइंग कैंसल्ड एंड सिंगल पी इज बीइंग कॉपीड, बाकी टर्म एज इट इज. ओके, नाउ वी हैव अप्लाइड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, negation P और Q, negation P और R. Similarly P और negation Q, P और negation R. Okay, now this is in the CNF form. ये जो है हमारा CNF फॉर्म में है, that is product of sum फॉर्म में है, but principal में नहीं है. This is already in POS form, but this is not in principal conjunctive normal form. ये principal फॉर्म में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ R का टर्म मिसिंग है, यहाँ पर Q का टर्म मिसिंग है, यहाँ पर R का टर्म मिसिंग है, और यहाँ पे लास्ट में Q का टर्म मिसिंग है. PQR तीन वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट इसमें R का टर्म नहीं दिख रहा है, ये P Q R नहीं है, यहाँ पे P Q नहीं है. ओके, यहाँ पे R नहीं दिख रहा और यहाँ पे Q नहीं दिख रहा, तो जो भी टर्म मिसिंग है उसको हम ऐड करेंगे. Why? Because we need to convert it in principal conjunctive normal form. ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी, स्टेटमेंट इज ऑलरेडी इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. इसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास में मिसिंग टर्म है उसको हमको ऐड करना है. दिस स्टेटमेंट इज ऑलरेडी इन द कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. दिस स्टेटमेंट इज नॉट इन प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. प्रिंसिपल में नहीं है, तो प्रिंसिपल में होने के लिए क्या करना है,
प्रिंसिपल में होने के लिए क्या करना है, प्रिंसिपल में होने के लिए यहाँ जो टर्म मिसिंग है वी हैव टू ऐड। अब यहाँ का आर का टर्म मिसिंग है तो आई हैव एडेड दिस आर एंड निगेशन ऑफ आर। ये क्यू मिसिंग है तो क्यू को बीच में ऐड किया, क्यू एंड निगेशन। आर मिसिंग है तो आर एंड निगेशन आर। ये क्यू मिसिंग है तो क्यू एंड निगेशन। बाकी टर्म्स एज इट इज लिखी है, निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और आर, निगेशन पी और आर, निगेशन पी निगेशन क्यू, निगेशन सॉरी पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन आर, एज इट इज कॉपी किया। ठीक है, तो जो जो टर्म मिसिंग है वी हैव एडेड दोस टर्म सो दैट वी कैन गेट प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब क्या लगाया है, नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, आर को इन दोनों को दे देना है, पी क्यू आर दे दिया, निगेशन आर को इन दोनों को दे देना है, पी क्यू निगेशन आर। सिमिलरली क्यू इन दोनों को दे देना है, निगेशन पी क्यू आर। इस निगेशन क्यू को भी दे देना है, ये देखो ये एज इट इज, निगेशन पी निगेशन क्यू निगेशन आर, निगेशन पी निगेशन क्यू एंड आर, निगेशन पी निगेशन क्यू और आर। ठीक है, सिमिलरली ये वाला आर जो है ये दोनों के साथ में आ जाएगा, ये वाला आर, ये इसके लिए ये टर्म और ये टर्म, दो टर्म, इसके लिए एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसके लिए ये वाला एक टर्म और ये वाला एक टर्म, ये वाला स्टेटमेंट के लिए ये टर्म और ये टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये आर को पी और निगेशन क्यू के साथ में दे दिया, पी और निगेशन क्यू के साथ में आर दे दिया। ये निगेशन ऑफ आर किसके साथ में दे दिया, पी और निगेशन क्यू के साथ में, निगेशन ऑफ आर पी और क्यू के साथ में दे दिया। यहाँ पर पी और निगेशन आर, पी और निगेशन आर के साथ में एक क्यू और यहाँ निगेशन ऑफ क्यू, एक टर्म ऐड किया ना, क्यू एंड निगेशन क्यू ऐड किया तो यहाँ क्यू एक यहाँ आ गया, यहाँ निगेशन क्यू आ गया। यहाँ आर निगेशन आर किया है तो यहाँ पर आर आ गया, यहाँ निगेशन ऑफ, यहाँ पर आर आ गया, यहाँ निगेशन ऑफ आर आ गया। यहाँ पर क्यू निगेशन क्यू, यहाँ क्यू आ गया, यहाँ निगेशन क्यू आ गया। यहाँ पर आर निगेशन आर, यहाँ पर आर आ गया और यहाँ पर निगेशन ऑफ आर आ गया। ये देखो ये टर्म, यहाँ पर क्यू का टर्म आया, ये क्यू का टर्म, यहाँ पर आर का टर्म आया, ये आर निगेशन आर, यहाँ पर क्यू और ये निगेशन क्यू। अब जो भी डुप्लीकेट है उनको रिमूव कर देना है। ये टर्म कॉपी किया, देन ये टर्म कॉपी हुआ, देन ये देखो ये फर्स्ट टर्म की इक्विवेलेंट है, निगेशन पी क्यू आर। ये वाला टर्म जो है वो डबल है, दो बार लाइन लगा दी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम, दिस एंड दिस टर्म इज सेम, तो इसको रिमूव कर देना। अब यहाँ पर देखो ये वाला टर्म कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला टर्म आ गया, उसके बाद में ये वाला टर्म आ गया, देन ये वाला टर्म आ गया और ये वाला टर्म भी डुप्लीकेट है, पी और निगेशन क्यू निगेशन आर, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये डबल है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो इसको नहीं दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स हमारे पास में आ गए हैं। दिस इज इन प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। देखो अगर मैं एक बताती हूँ, और ये तीन वेरिएबल्स है, पी क्यू आर, तीन वेरिएबल्स है, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3, टोटल हमारे पास में कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 8। तो या तो जो हमारा प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म आएगा उसमें 8 टर्म्स आएंगी या 8 से कम आएगी। तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 8 या 8 से कम 6, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8। ओके, सो दिस वे ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट कि हमारे पास मैक्सिमम टर्म्स कितने आ सकते हैं और मिनिमम कितने आ सकते हैं, कोई भी 0, वो टोटोलॉजी या फॉल्स हो सकता है। सो नाउ दिस इज अवेलेबल इन द प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। नाउ आई एम ending the lecture.